सब गुडा आंसर रे मु गोटे तुमको इजी करिया पई तुमको गोटे माने बेटर गोटे आइडिया दवा पई आंसर राइटिंग टाको गोटे भलो क्वालिटी फोकस करिया पई सब गुडा क्वेश्चन रे मु तुमको अप्रोच टा मु एठे मेंशन कर देछि ओके जहा जहा तुमको दरकार आराम से एगुडा होछि तो 10 मार्क रो क्वेश्चन 20 मार्क भी तुमको टिके शो करे दोछि लुक एट दिस दीज आर 20 हां 11 नंबर देखो दीज आर 15 मार्क्स माने तुमको पाखा पाखी 250 वर्ड्स रे तुम लिखिबो तो 250 वर्ड्स रे केमिति लिखिबो ता पई भी मु एटे लिखि देछि कि कोन कोन तुम कीवर्ड यूज करिया दरकार इंट्रोडक्शन केमिति लिखिबो बॉडी केमिति होवा दरकार कंक्लूजन केमिति होवा दरकार सो देखो एबे तुमको इमीडिएटली बेसिस रे हां ठीक अछि ताले इमीडिएट बेसिस रे तुमको कोन करया पड़िबो ओके ओपीएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो ठीक अछि ओपीएससी रो पीवाईक्यूज गुडा इट्स ओके नो प्रॉब्लम बट मोर सजेशन रहिबो कि लास्ट 5 इयर्स रो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रो पीवाईक्यू टिके तमे देखि लियो हमें इंतरे भी जो माने हमर आंसर राइटिंग प्रोग्राम जोटा सेtra हम डिस्कशन करिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा बट तम तरफ रो भी टिके यूपीएससी रो पीवाईक्यूज गुडा देखि लियो तो सेठु गोटे आइडिया पळे आसीबो जे केमिति क्वेश्चंस आसीची एवं तमे रेडी रहिबो ओके नाउ आमे आसीबा स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आंसर राइटिंग तो आई बिलीव मु गोटे अंडरस्टैंडिंग नै कि चालुची दैट ऑल ऑफ यू हैव प्रायर नॉलेज of the subject so I do not consider you people at the level of zero तो मु तुमको एब्सोल्यूट बिगिनर हिसाब रे मु धरुनी मु भाबुची जे तमरो किछिटा गोटे बेस अछि अंडरस्टैंडिंग अछि सो वर्तमान मोर काम कि आम समस्त सब टीचर काम होची से बेस को वर्तमान गोटे डायरेक्शन दबा कि मेंस पई जहां हमको दरकार आंसर राइटिंग रे भलो गोटे आंसर केमती हवा दरकार हम ताकू डायरेक्शन दबा ओके सो तुमको एथिरे बहुत सारा सेल्फ स्टडीज पई भी तुमको मु सजेस्ट करबी टिके कंटेंट ऊपर ध्यान दियो ना कमिंग टू द एक्चुअल पिक्चर सी हाउ टू राइट अ गुड आंसर साधारणतः जेतेबेले हमें आंसर राइटिंग बोली कहू आंसर राइटिंग रे दुईटा जिंस अछि देयर आर टू थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट मु कहबी फर्स्ट क्राइटेरिया प्रथम जिंस जोडा तुमको फुलफिल करेबो पड़ियो आंसर राइटिंग रे सेटा होचे कंटेंट किमा नॉलेज एटा होचे प्रथम क्राइटेरिया तुमरो ओके जदि कोनोसी टॉपिक रो ऊपर तुमरो नॉलेज नाही तले कोन लिखिबो तमे सो कोनोसी भी कंटेंट लिखिया पूर्वरु मु सजेस्ट करबी कि सेई चैप्टर टाको तुमे भलो भाबरे पढाओ सेकंड जिंस एक्चुअल जोटा राइटिंग स्किल्स स्किल्स टाको केमिति डेवलप करिया हबो थ्रू प्रैक्टिस ओके सो स्किल्स टा डेवलप केमिति हबो थ्रू प्रैक्टिस कंटीन्यूअसली जेतोले तमे प्रैक्टिस करिवो नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज तमे जेतोले दबो फीडबैक तुमको मिलला पारे तमे पुनी अत्र फीडबैक को नेकी एनहांस करिवो तो देन योर स्किल विल बी डेवलप्ड सो जो कंटेंट जोटा अछि एंड नॉलेज पार्ट जोटा सेटा मु भाबुची कि तुम मानकर टिके बेस अछि आ जहार भी तुमको लागुची जे नाही टिके कोथरे कमी रहि जाउची मु सजेस्ट करबी ताकू टिके कवर अप करि दियो ओके नाउ मु बिलीव करूची दैट हमर राय एकेडमी तरफ जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम रो गोटे जो शेड्यूल हमर तयारी हेची से शेड्यूल ता समस्त पाखरे अछि ऑल ऑफ यू हैव द शेड्यूल का पाखरे नाही कि शेड्यूल ओके सो से शेड्यूल रे तमे निजे जानि परथिबो कि केते नंबर टेस्ट रो कोन सिलेबस अछि तो मु एते डिटेल्स रे जाउनी ता भितर को अननेसेसरी टाइम वेस्ट मु करिया में चाहुनी तो से शेड्यूल टाको तमे रेफर करो एवं सेही हिसाब रे जो दिन जो टेस्ट अछि ता पूर्व रे भलो रे निजे टिके प्रिपेयर हे जाओ जेहेतु आज जो मोटिव अछि कि टेस्ट नंबर 1 ताको हमें डिस्कशन करिबा तो हमें ताकू हमें आगु को बढ़िबा बट ता पूर्व रो हमरो राय एकेडमी तरफ रो जो फीडबैक तुमको मिलिबो खाता रे यू कैन सी द फीडबैक एथरो टिके डिफरेंटली तुमको मिलिबो पूर्व वर्ष टू हमें भी काफी सारा चेंजेस हमें करिछु नॉर्मली जेमति ओपीएससी फॉर्मेट तुमको रोलिंग पेपर रे मिलिबो जेमति रोलिंग पेपर तुम लिखि परिबो सो साधारणतः मु जोटा कहिली कि गोटे भलो आंसर काहा को कहा जाय
ଭଲ ଆନ୍ସର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାର ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି। ଓକେ, ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ କି ସପୋଜ ଗୋଟେ କ୍वेଶ୍ଚन ଆସିଲା, ତାର ପ୍ରପର ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଇଛ ତମେ, ତାର ଗୋଟେ ବଡି ପାର୍ଟ ଲେଖିଛ, ତାର କନକ୍ଲୁଜନ ପାର୍ଟ ଲେଖିଛ, ଭଲ ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତମେ ଆର୍ଟିକୁଲେସନ ଭଲରେ କରିପାରିଛ, ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଏ ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଓକେ, ତ ଆମେ କୋଉ କୋଉ ପାରାମିଟରରେ ଇଭାଲୁଏଟ କରୁ ପିଲାଙ୍କର ଖାତା, ଯୋଉଟା ଓପିଏସ୍ ରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ। ତ ସେମାନେ କଣ ଦେଖନ୍ତି? ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କଣ ଅଛି କି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ କି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅର୍ଥ କି ସେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଯାହା ପଚାରିଛି ତମେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିଛ କି ନ କରିଛ, ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଆନ୍ସର, ରିପୋର୍ଟସ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ, ଯଦି କିଛି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଦରକାର ରିପୋର୍ଟସ, ଯୋଉଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦରକାର, ତମେ ସେଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛ କି ନ ଦେଇଛ। ଥର୍ଡ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଓକେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ର ଅର୍ଥ ଫ୍ଲୋ ଅଫ ଆନ୍ସର। ଏବେ ତମେ ୟୁପିଏସସି ରେ ବି ତମେ ଦେଖିଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା କଣ ଥାଏ ମେନ୍ସ ର, ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ କେତେଟା ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ, ଯଦି ଦେଖିଥିବ, ଯଦି ଦେଖିନ ଦେଖିଦବ କି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ଦି ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ସେ ଦୁଇ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବି ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି। ଅର୍ଥ କି ସେ ଯୋଉ କନେକ୍ସନ ଟା ଦରକାର, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର କନେକ୍ସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର କନେକ୍ସନ, ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ଲୋ ଅଫ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ଫ୍ଲୋ ଅଫ ଆନ୍ସର ଟା କେତେ ତମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛ, ଡାୟାଗ୍ରାମ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ନେସେସରି ସେଠି ତମେ ଦେଇଛ କି ନାହିଁ, ନିଟନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ। ନିଟନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ର ଅର୍ଥ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କି ଗୋଟେ ଖାତା ଯଦି କୋଉଠି କଟାକଟି ହେଇନଥିବ ଆମକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ବି ଗୋଟେ ଲେଜିବୁଲ ହବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଜଣେ ପଢି ପାରୁଥିବା, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ହିଁ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ତମେ ଯିଏ ତମର ଖାତା ଚେକ୍ କରିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ସିନିୟର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଇରିଟେସନ ଫିଲ୍ ନ ହଉ ତମ ଖାତାଟା ଦେଖିକି। ତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଗୋଟେ ବି ଅଛି କି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର, ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଖାତା ଅଛି, ଛାଡି ଛାଡି ଲେଖିଛି, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, କଟାକଟି ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି, ଦେନ୍ ତମେ ଦେଖିପାରିବ କି ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଦୁଇ ମାର୍କ ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ର ଅର୍ଥ କି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଲେଖୁଛ, କେମିତି ତମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରୁଛ। ଯେମିତି ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ପଲିଟି ର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ବି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକଲି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ ୟୁଜ କରୁଛେ, ପଲିଟିର ବି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଜେନେରାଲିଷ୍ଟିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରିବା, ସେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ୟୁଜ କରିବା, ତ ଏତେ ମାର୍କ ଫେଚିଂ ନ ହେଇପାରେ। ସେ ଯୋଉ କି ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ କି ନାହିଁ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆମେ କେମିତି ଦଉଛେ, ଆମେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଶଶି ଥରୁର ଭଳିଆ ଇଂଲିଶ ଦରକାର, ବହୁତ ହାଇଫାଇ ଇଂଲିଶ, ଏମିତି ନୁହଁ, ବଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ଅଫ ଇଂଲିଶ ଦରକାର ଯୋଉଠି କି ଜଣେ ଦେଖିକି, ଜଣେ ଆନ୍ସର ଟା ପଢିକି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ନାହିଁ ପିଲାଟା ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଲେଜ ଅଛି। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆଉ ଏନି ଅଦର ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଥିବ ସେଟା ଉପରେ ବି ଆମେ ଫିଡବ୍ୟାକ ଦବୁ। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ବେସିକାଲି ମୁଁ କହିବି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଭଲ ଆନ୍ସର କାହାକୁ କହିବା, ଯଦି ତମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତମେ ବହୁତ ବଢିଆ କରିଛ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଫୋକସ କରିଛ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ତମେ କରିଛ, ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଉପରେ ତମେ ଯଦି ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛ, ଦେନ୍ ତମେ କହିପାରିବ କି ନାଇଁ ମୋର ଆନ୍ସର ଭଲ ହେଇଛି। ଓକେ, ଇଜ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏ ଭିତରେ ଯଦି କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରିଦିଅ ମତେ। You can interact, don't worry. ଯଦି କିଛି ବି କାହାର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, feel free to ask. ଓକେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଜଗମୋହନ, ବିନୟ, ଏସ୍, ସାହୁ, କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରି ଦିଅ। କ୍ଲିୟର, ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଓଭରାଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ର ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଣ କି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ନ ଲେଖିଛେ, ଆନ୍ସରଟା ମଡେଲ ଆନ୍ସର କେମିତି ହବ ନ ଦେଖିଛେ, ତମେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇକି କହିଲି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ତା ଉପରେ ତମେ ଖାଲି ଯଦି ଭାବିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଭଲ କରିଦେବି, ସେମିତି ହବନି। ସୋ ୟୁ ହ୍ୟାଭ ଟୁ ଲିଟରାଲି ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନ ଲେଖିଛ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରି ହିଁ ପାରିବନି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଦ ମୋର ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦ ବେଟର ୟୁ ଗେଟ୍। ଓକେ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଓଭର ଦ ନାଇଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ଅ ବିଟ୍ ଅଫ ଟାଇମ। ତ ଯଦି ତମେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦବ ଏତେ ଭଲ ନ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ, ଥର୍ଡ, ଫୋର୍ଥ, ଫିଫ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବେଳକୁ ତମେ ଦେଖିବ କି ତମର ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଟା ବହୁତ ହିଁ ଫାଇନ ଟ୍ୟୁନ୍ ହବ। ସୋ ମୋର ସିମ୍ପଲ ସଜେସନ ରହିବ
केबे भी अधैर्य हबनी पेशेंस हरैबनी ठीक अछि जदि प्रथम गोटे दिटा टेस्ट जदि खराब होछि इट्स ओके नो प्रॉब्लम बट सब्सिक्वेंटली सब बेले ट्राई करो टेस्ट गुडा अटेम्प्ट करिया पई अब जो दिन जो समय टेस्ट अछि ताकू टिके अटेम्प्ट करिया पई सिंसियरली ट्राई करो कमिटमेंट टिके रखो देखियो निश्चित रूपे तमर आंसर राइटिंग बहुत ही इंप्रूव हबो ओके सो लेट अस गो टू द टेस्ट नंबर 1 हमर जोटा हेछि आई थिंक क्वेश्चन पेपर समस्त पाखे थिबो ओके जदि नाही तमे डाउनलोड कर दे परिबो स्टूडेंट पोर्टल रो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन ओके हां एटा बोले ओके देखि परछो स्क्रीन रे सर समस्त को देखा होची एवरीबॉडी जस्ट मते मेसेज रे गोटे कंफर्म करो ओके Yes, sir. Yes, sir. ठीक यस सर ओके देखो हम रायकाडेमी रो भी एथरो जो क्वेश्चन हमें डिजाइन करिछु बहुत माने मु पर्सनली बिलीव करूची गोटे लेवल प्लेइंग बलिया एंड एडिशनली एटा जे बोथ ओडिया एवं इंग्रजी रे तमरो क्वेश्चन पेपर रही छी ओके संपूर्ण एंड इंटरेस्टिंगली एथरो माने एग्जैक्टली यूपीएससी स्टाइल रे जहा दरकार जोटा कि गोटे यूपीएससी स्टैंडर्ड रे जोटा हुए आमर क्वेश्चन पेपर गुडा भी से भलिया अछि जेमति कि दिस इज अ सेक्शनल टेस्ट आमर एटा सेक्शनल टेस्ट एटा ओके ए सेक्शनल टेस्ट रो भी 3 आवर्स अछि प्लस 250 मार्क्स अब जेमिति यूपीएससी स्टाइल रे तमरो 10 मार्क्स एंड 15 मार्क्स रो 2023 रे इंट्रोड्यूस करा हेछि से भलिया तमे एटी क्वेश्चन पाइबो नाउ इंस्ट्रक्शंस गुडा तमे रिजे पढि नबो मु खाली टिके ब्रीफली कहि दोछि 1 रु 10 क्वेश्चंस 150 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली एंड 11 to 20 प्रश्न उत्तर 250 शब्द रे हेबा उचित 250 वर्ड्स तुमको लिखिया पड़िबो आ गोटे जिंस मु एटी लिखि दोछि एटी मु कहि दोछि जेहेतु मॉडल आंसर ता तमर क्वेश्चन ता बोथ इंग्लिश एवं ओडिया रे मेंशन हेछि तो जदि कोनोसी इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द मीनिंग द इंग्लिश वर्जन विल ऑलवेज प्रिवेल अर्थ जदि ओडिया रो ट्रांसलेशन एवं इंग्रजी रो जहा लिखा हेछि ता भीतर जदि किछि तुमको डिस्क्रिपेंसी लागे फरक लागे ताहाले सब बेले इंग्लिश रे जोटा लिखा हेछि दैट विल प्रिवेल ओके तमे इंग्लिश रो जिंसटा को रेफर करि परिबा आई थिंक ओपीएस रे भी ए वर्ष प्रीलिम्स रो तमे जदि पढिबो इंस्ट्रक्शन सेथरे भी से जिंस लिखा हेछि जदि मीनिंग रे कोनोसी प्रकार डिफरेंस लागे तबे इंग्लिश रो जहा लिखा हेछि दैट विल ऑलवेज प्रिवेल चलो सो दिस इज द हमरो रायकाडेमी रो क्वेश्चन पेपर तो प्रथम क्वेश्चन देखिबा एमडी टोटल तमरो पाखा पाखी मु आई थिंक क्वेश्चन पेपर टा मु ओपन कर दोछि बेटर हबो जस्ट गिव मी अ सेकंड क्वेश्चन पेपर आई थिंक इथिला जीएस आई थिंक एटा बोधे हाँ दिस इज द क्वेश्चन पेपर एटा होछि तमरो क्वेश्चन पेपर बोथ ओडिया एवं इंग्लिश रे अछि देखो तुम निजे देखि परथिबो गोटे सिस्टमैटिक वे रे टोटल तमरो 20 टा क्वेश्चन अछि 20 नंबर क्वेश्चन 1 रु 10 होछि टोटल 10 मार्क्स ओके देन 11 टू 20 होछि तमरो 15 मार्क्स करी जेमते यूपीएससी स्टाइल रे से भले एग्जैक्टली हमर एठी करा हेछि ना क्वेश्चन रो लेवल गुडा भी हमें चेंज करछु ए वर्ष जेमती तुमको रिक्वायरमेंट नुवा पैटर्न रे सिंपिया तमरो दिया हेछि चलो वर्तमान आसीबा मॉडल आंसर को ओके तो आज मे बी टाइम परमिट न करि पारे सब गुडा मॉडल क्वेश्चन डिस्कस करिया पे बट एटलीस्ट मु आज किछिटा क्वेश्चन डिस्कस करबी आउ ए जो मॉडल आंसर रो जो पीडीएफ टा अछि ताको मु स्टूडेंट पोर्टल रे मु अपलोड कर देबी तमे आराम से सेटू तमे डाउनलोड कर देकी तमे निजे ताको रेफर करि पारिबो ऑलराइट तो समस्त रेडी हम स्टार्ट करिबा ताले ऑल ऑफ यू हां मॉडल आंसर पीडीएफ मु अपलोड कर देबी मु कहिबी एडमिन को अपलोड करिया पे हमर जो स्टूडेंट पोर्टल अछि तमे से स्टूडेंट पोर्टल नु डायरेक्टली डाउनलोड करि पारिबो सो शुड वी स्टार्ट देन ऑल ऑफ यू जदि तमे रेडी अछो यस सर ओके ठीक Yes, sir. देखो प्रथम क्वेश्चन कोन कहूची प्रथम क्वेश्चन कहूची कि भारत सरकार अधिनियम 1935 अर्थ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 fail short of achieving its intended goals comment ओके तो आमे फर्स्ट जिंस मु तुमको कोन कहि छी
प्रथम जिनस मु तुमको कहिची कि तमरो फर्स्ट काम होची क्वेश्चन को बुझिबा फर्स्ट काम डायरेक्टली आमे कोन करू कि वी जंप टू राइट डाउन द आंसर सेटा भूल धारणा क्वेश्चन कोन अछि भलो भाबरे पढ भलो भाबरे बुझिया को चेष्टा कर क्वेश्चन को होची कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 failed short of achieving its intended goals अर्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जोटा 1935 मसिया ता सेमाने जो सेही समय रे जो गोल गुडा सेट करथिले से एक्ट माध्यम रे अचीव करिया पई से गोल गुडा अचीव हेई पारि नाही कमेंट करो ता विषय रे ओके तो दिस इज द क्वेश्चन अर्थ क्वेश्चन एया नुह कि व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बहुत पिला भूल रे कोन करंती से माने फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 लिखिया स्टार्ट करंती किंतु क्वेश्चन सेटा नुह क्वेश्चन कोन पचाछि कि जो एक्ट माध्यम रे जो गोल्स कोडा अचीव करिया पई तांकर टारगेट थिला से गोल्स कोडा से अचीव करि पारि नाहंती ता पर तम कोन कमेंट करिया पई चाहूछो करो ओके दिस इज द क्वेश्चन समस्त बुझी गेले क्वेश्चन वर्तमान देखो तुमको इजी करिया पई हमर जो मॉडल आंसर रे तमे निजे क्वालिटी देखि परथिबो कि तुमको इजी करिया पई एठी केमिति आंसर टाको अप्रोच करिवो सेटा भी हमें कर देइछु तो एठी तमर इंपोर्टेंट कोन अछि इंपोर्टेंट कीवर्ड्स कोन कीवर्ड होछि तमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 तो तीनटा जिंस तमर इंपोर्टेंट अछि कोन फर्स्ट होछि इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन रे तमे कोन लिखिबो एटा भी गोटे ब्रीफ दे देछि कि गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 सो इंट्रोडक्शन रे तमे लाइन किमा दीटा लाइन खंडे ब्रीफली तमे लिखिबो जीओआई 1935 ऊपर बॉडी रे कम दबो बॉडी रे तमे कोन लिखिबो provide a concise overview of different provisions found in government of india act of 1935 okay जो different provisions of अछि features of अछि 1935 रो ता विषय लेखिबो किंतु तार जो लेखिबार एंगल ता हबो आइडेंटिफाई इट्स शॉर्टकमिंग्स subsequently outline the significance of the government of india act of 1935 in the development of the indian constitution okay अर्थ तमे फीचर्स तो लेखिबो बट फीचर जो लिखिबार जो सेंटेंसेस गुडा अछि से सेंटेंसेस रे जो एंगल दरकार तुमको सेटा खाली फीचर रो एंगल दरकार नै को एंगल दरकार कि कोठी को फीचर्स गुडा बेटर हेची को फीचर्स गुडा कम रही हेची तो सेही एंगल रो तुमको लिखिया पड़िबो कंक्लूजन कोन कंक्लूड विथ अ रिलेवेंट सब्जेक्शन ओके सो दिस इज योर अप्रोच बुझी परछो तो तुमको इजी करिया पई आउ टिके बेटर करिया पई एठी ए भले हमें कर दीचू मॉडल आंसर रे कि कीवर्ड्स कोन दरकार इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन रे केमिति तमे अप्रोच करिवो गोटे क्वेश्चन को ओके सेटा तमे एठी जानि गलो सो दिस इज द ब्रीफ समरी नाउ आंसर केमिति होबो देखो फर्स्ट हमें कोन लिखिले फर्स्ट हमें किछिटा इंट्रोडक्शन दे देबा इंट्रोडक्शन रे कोन लिखिबा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिस्पाइट इट्स फ्लॉस रिमेंबर मु कोन कहिली क्वेश्चन बुझो क्वेश्चन कोन कहूची कि फेल शॉर्ट ऑफ अचीविंग इट्स इंटेंडेड गोल्स अर्थ कि मोर जो लेखार जो स्टाइल होबा दरकार सिंपली व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन लिखा होबो इंट्रोडक्शन शुड बी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन तार अर्थ एटी फेल शॉर्ट ऑफ अचीविंग इट्स गोल्स जेहेतु से कहिची तार अर्थ कोठी ना कोठी मते लागुची माने हमकु लागिबा दरकार कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट परफेक्ट नुह इट्स नॉट अ परफेक्ट अर्थ मो इंट्रोडक्शन ता मु सेमति लिखली कोन लिखली मु इंट्रोडक्शन लिखली कि डिस्पाइट इट्स फ्लॉट माने यार फ्लॉज अछि किंतु इट वाज अ लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इंडिया's political landscape and contributing to the development of the Indian constitution look at the तमे बुझी पालो इंट्रोडक्शन ता केमिति होबा दरकार खाली जे गवर्नमेंट ऑफ व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 that should not be the introduction should satisfy the demand of the question so demand of the question कोन कहिची demand of the question कहिची कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एते इंपोर्टेंट एक्ट बट एटा निजर अचीव करि पारिनी तार अर्थ तुमको दीटा हाइलाइट करिया पड़ियो यार तमे मेंशन करलो कि डिस्पाइट इट्स फ्लॉज एथिरे फ्लॉज भी अछि किंतु it was a landmark piece of legislation that played significant role in shaping India's political landscape and contributing to the development of the Indian constitution तार अर्थ तमे एक्नॉलेज करूचो कि हां एथिरे किछटा फ्लॉज अछि तमे एटा भी एक्नॉलेज करूचो कि हां जेहे जदियो फ्लॉज अछि किंतु बहुत गोटे सिग्निफिकेंट एक्ट सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ओके वर्तमान आसीबा बॉडी पार्ट को बॉडी पार्ट रे कोन अछि हमरो
गाइडलाइंस कौन लिखा है गाइडलाइंस लिखा है कि फीचर्स को नहीं कि हमको से एंगल रे लिखिया पड़िबो ओके देखिबा सो एठी मु गोटे आमे हेडिंग दे देले की एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्ट कौन कौन प्रथम होची कॉन्स्टिट्यूशनल एंगेजमेंट लीडिंग टू डोमिनियन स्टेटस एबे तमे आई थिंक लक्ष्मीकांत बहिर भी तमे मे भी पढ़ी थिबो बट टिके ट्राई करो बही तमे कंटेंट कोठु पढ़ो देयर इज नो प्रॉब्लम बट जेतबेले तमे लिखिबो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द ओरिजिनलिटी तमरो निजरो टिके ओरिजिनलिटी मेंटेन करो सो दैट it should not look like copy paste it should not look like कि पांच जनकर आंसर देखिले पांच जनकर सेम लागुची सिमती लागि न लागिबा दरकार तुमको सी काहे एक्स्ट्रा गोटे 2 मार्क दबो तमे एमते कोन एक्स्ट्रा लिखिछो ओके इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ आंसर तमे अन्य मानको जदी एक्स्ट्रा ते लिखिछो एक्स्ट्रा कोन जदी कीवर्ड मेंशन करिछो मे बी तमरो प्रेजेंटेशन टिके बेटर तमे शो करिछो ऑटोमेटिकली तमे एक्स्ट्रा गोटे 2 मार्क पाइबो अन्य मानको सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एटी कौन लिखला कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंगेजमेंट लीडिंग टू डोमिनियन स्टेटस समस्त पढ़िथिबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत रे तमे डिटेल से पढ़िथिबो बट एठी लेखार शैली कौन देखिबा द एक्ट वाज culmination of India's political journey incorporating key milestones in the country's struggle for independence while Indians were not directly involved देखो while Indians were not directly involved अर्थ कौन अर्थ तमे एठी शो करूचो कि फ्लॉज कोन माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रे कोन कोन बैकड्रॉप्स थिला ओके तो गोटे तमे बैकड्रॉप एठी शो करलो कि व्हाइल इंडियंस वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व its drafting it marked a step towards establishing a fully responsible government अर्थ देखो गोटे ही पॉइंट रे तमे एठी यारो बैकड्रॉप्स गुडा भी तमे शो करूचो जोटा कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अछि एट द सेम टाइम तमे एटा भी शो करूचो कि the act was culmination of India's political journey incorporating key milestone यार achievements गुडा को भी तमे शो करूछो तार अर्थ तमे बुझिया को चेष्टा करो बॉडी रे तमे केमिति लिखुछो यू आर नॉट सिंपली राइटिंग व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ना तमे से जो फीचर ता अछि से फीचर रो अचीवमेंट कोन आ से फीचर रो बैकड्रॉप्स कोन ए दीटा जिंसो तमे एकाधरे गोटे पैराग्राफ रे किबा गोटे सेंटेंसेस किबा दि तीनटा सेंटेंसेस रे गोटे पॉइंट रे तमे मेंशन करूछो बिकॉज़ दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ओके सेकंड जिंसो देखो कोन लिखिची कि फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए पॉइंट रे हमें कोन लिखिबा कि मेनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट वेर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुम समस्त जानिछो कि 1935 एक्ट रो बहुत सारा प्रोविजन हमें इंडियन भारत रो संविधान रे हमें इनकॉर्पोरेट करिछु इंक्लूडिंग फेडरल स्कीम्स जुडिशियरी पब्लिक सर्विस कमिशंस एंड ऑफिस ऑफ द गवर्नर the experience gained from acts implementing significantly contributed to the drafting of the India's constitution हमन 1935 रो जो हमें पाइले जहां भी हमें नॉलेज पाइले एक्सपीरियंस पाइले सेटा हमको बहुत ही मात्रा रे हेल्पफुल हिची कोथरे जेतोळे हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माध्यम रे हमर भारत रो संविधान को हमें ड्राफ्ट करथले देन देखो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट किछि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट द एक्ट laid the foundation for critical institutions such as Federal Public Service Commission जोड़ा Union Public Service Commission बोले तुम कुह Provincial Public Service Commission जोड़ा कि State Public Service Commission बोले कुह Joint PSC है गला Federal Court है गला Federal Railway Authority Federal Bank these institutions have played a vital role in India's post-independence development isn't it इला सत कथा आउ कोन कोन अछि देखो Provincial autonomy the act abolished diarchy granting provinces unprecedented autonomy with independent financial powers and borrowing capabilities. This helped to strengthen the foundation of provincial governments and prepare them for the self-governance. तार अर्थ कि provincial autonomy को enhance करिया पई Government of India Act 1935 रो बहुत बड़ गोटे हाथ अछि. Protection of minorities rights रे कोन अछि देखिबा The act safeguards the rights and minorities including women and scheduled caste. This was a significant step towards ensuring equality and justice for all Indians. Okay. Next, operational significance. The Act's provision remained in force until August 15, 1947. The provincial part was enacted between 1937 to 1939. This means the Act played a key role in India's governance during the crucial year leading up to independence. Okay. देखो again मु कहि रखुची always try to fulfill the demand of the question रो जहा डिमांड से पचारची से एंगल रे टिके ट्राई करो लिखिबा पई एठी हमें कंक्लूड केमति करियो जेमिति हमें इंट्रोडक्शन एठी करले
कि दुईटा आम एंगल देखेले ये फ्लॉज भी देखेले ये आम तार अचीवमेंट भी देखेले से भाया आम कंक्लूजन रे कौन लिखले देख कि व्हाइल द गवर्नमेंट ऑफ Sir, इंडिया sorry, sir. Sir, I have a doubt. ठीक है मु कंक्लूजन टा कंप्लीट कर दिए देन वी विल डिस्कस ओके सो कंक्लूजन रे आम केमती लिखिबा पुणी आउथरे आम एटी मेंशन करले कि व्हाइल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वाज नॉट परफेक्ट आम जानि इट इज नॉट अ परफेक्ट but it was a significant step forward in India's constitutional and political development. It laid the foundation for many of the institution principles that are enriched in the Indian constitution today. So, I acknowledge करुचे although it is not a perfect, but हाँ Government of India Act आमे ताको completely जदि कहिबा कि नाइ सीए it is wrong to say कि all of the achievements of Government of India Act of it fails out. It is wrong to say. Some of the goals they may not have achieved. किछिटा गोल से माने अचीव न करि पारि थांती बट ओवरऑल जदि आमे देखिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गोटे बहुत बड़ योगदान देइछि हमरो इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करिया पय सो जोटा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अछि तमे ताको एठी फुलफिल करूछ ओके सो दिस इज हाउ शुड बी अ मॉडल आंसर अकॉर्डिंग टू 150 वर्ड्स एटा तमरो 10 मार्क माने 150 वर्ड्स मैक्सिमम हाँ 10-20 मार्क्स प्लस माइनस हेई परिबो डोंट वरी अबाउट दैट किंतु 150 वर्ड्स अप्रोक्सीमेट मु कहूची से हिसाब रे तमे एटा लिखि परिबो एमते यस पचार वर्तमान कहार जहार जहा प्रश्न अछि प्लीज फील फ्री टू आस्क Sir, it is a question that दिया है sir. It question दिया है कि 1935 Act, Indian Government रो Indian Act 1935 काहेकि से समय फेल करथिले तो सर एठी तो केठी भी लिखा है जे हमें अचीव से टाइम रे कोन करथिले ना ना बुझी पालिन तो पुनी only the क्वेश्चन point sir here question has asked that in Indian government 1935 रे कोन 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 पाई फेल करथिले से ना टाइम ना रे दैट इज नॉट द ताको गोल क्वेश्चन को अचीव करिया पाई दैट इज नॉट द क्वेश्चन आई थिंक स्टिल यू हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन क्वेश्चन कोन देइछि क्वेश्चन तमे ओडिया रे देखो ओडिया रे भी पढो भारत सरकार अधिनियम 1935 एहार धार्य लक्ष्य हासिल करिबारे अभाव होइथिला अर्थ कि सेही समय रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ऑब्जेक्टिव रे तयारी करा हितला सेही ऑब्जेक्टिव से माने सब गुडा अचीव करि पारि नाहंती कमेंट दैट इज द क्वेश्चन ओके 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 सेति सर पई क्वेश्चन ओके टाको टिके रिपीटेडली पढिबो माने तमे जदि फर्स्ट टाइम गोटे थर पढिबो मे बी तमे धरि न पारो क्वेश्चन गुडा तो एटलीस्ट तमे दि तीन थर पढिबो क्वेश्चन ता देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड एक्जेक्टली कि कोन पचारछि क्वेश्चन ता ओके ठीक अछि समस्त बुझी पालो कहार किसी डाउट अछि जदि पचार अभिषेक भगवान विनय सर प्रशांत हाँ वो सर ये जो की टर्म्स थे जो कमेंट बोली देइछि तार कोन वैल्यू अछि से कमेंट रो अर्थ कमेंट सॉरी कमेंट रो अर्थ कोन तमरो निजरो जहाँ भी तमरो आइडिया अछि गोटे टॉपिक ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिन डेटा पछे अछि ता ऊपर टिप्पणी दबा दैट इज बेसिकली कमेंट मींस ओके आउ सेटा डिपेंड करे क्वेश्चन ऊपर को क्वेश्चन ऊपर तमरो इलुसिडेट थिबो इलाबोरेट थिबो क्रिटिकल एनालाइज थिबो सेटा डिपेंड करे कि से क्वेश्चन ऊपर कोन अछि बट एते भी डिफरेंस नु हो मु कहि रखिबी गोटे जिंस कि एते भी डिफरेंस नु हो गोटे तमे भाबोनी जे गोटे हेल एंड हेवन टाइप रो डिफरेंस अछि कमेंट भितर क्रिटिकल एनालाइज भितर एते भी डिफरेंस नु खाली गोटे ओरिएंटेशन ऊपर डिफरेंस अछि दि चारटा पॉइंट क्रिटिकल एनालिसिस रे तमे पांच जनकर पर्सपेक्टिव दबो बट कमेंट रे तमरो नेसेसरी एते नु कि कहार कहार को पर्सपेक्टिव को इंस्टीट्यूशन रो कोन पर्सपेक्टिव अछि किबा को ऑथर रो कोन पर्सपेक्टिव अछि एगुडा एते दरकार नु कमेंट रे ओके ओके ठीक अछि यस आउ पचारो कहार किछि प्रश्न सुरेंद्र बुझी पालो Sir, good evening, sir. हां को Sir, मोर डाउट थिला कि sir, can we write quotation, sir, conclusion रे? हां कोटेशन लिखि परिबो इफ द वर्ड लिमिट परमिट्स Yes, sir. Like जंती पंडित नेहरू कहथिले कि चार्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज चार्टर ऑफ स्लेवरी
or a machine with all brakes with no engine, तो से टाइप एमती short quotations देई हो माने essay रे जेमती हम लिखो देई पारिबो ओके सर बट एते भी बड़ा कोटेशन दियोनी बिकॉज अल्टीमेटली वर्ड लिमिट तमर बहुत लिमिटेड 150 वर्ड्स ओके सर तो सर 150 वर्ड्स माने ओनली केवल गोटे पेज ही हबो तमर गोटे जदी A4 साइज रो जो पेज अछि ओपीएससी रो सर गोटे पेज होची 150 वर्ड्स सर तो तमे ट्राई करो से 150 वर्ड्स रे कोन क्वालिटी पॉइंट्स तमे देई परिबो ओके जदि सर परमिट होउची जदि स्पेस अछि वर्ड लिमिट अछि समय भी अछि देन तमे दियो नो प्रॉब्लम भलो ही हबो खराब किछि न सर सर ओके ओके Sir, थैंक यू सर ओके sir, आउ हां को तार कोन प्रश्न मैं ଆଉ ଗୋଟେ point add କରିପାରିବେନି କି the Indian National Congress and the Muslim League opposed Government of India Act in 1935 because of various drawbacks. तमे लिखि परिबो बट ताको गोटे एंगल दबाउ पड़िबो अगेन ओके जेहेतु तुम प्रश्न क्वेश्चन टा अछि जे कमेंट करिया पई तुम जदी पर्सपेक्टिव दउछ मे बी ताको टिके एंगल तुम देकी लिखि परिबो सो ए क्वेश्चन आ गोटे जिनस मु कहि रखु जे जो क्वेश्चन टा पचारिछि क्वेश्चन रो मु भाबुची कि तुमको तार ड्रॉबैक्स टू अधिक फोकस करिया पड़िबो कोन अचीवमेंट सेथिरे तमरो मार्क फेचिंग होबो अधिक ओके दीटा जिनस अछि आइदर तमे अचीवमेंट को फोकस करो किंबा तमे ड्रॉबैक्स ही सब गुडा लिखि परिबो दीटा जिनस तमे लिखि परिबो कि नै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को माध्यम रे खराब दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग किंबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तमे जदी एग्री करूछो कि यस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फेल शॉर्ट ऑफ अचीविंग इट्स इंटेंडेड गोल्स तमे ताको सपोर्ट रे लिखि परिबो किंबा तमे तार अपोजिशन रे लिखि परिबो बट आंसर तमरो गोटे बैलेंस हुआ दरकार ओके तो मोर एक्सपेक्टेशन रहिबो ए क्वेश्चन आंसर लिखिया पे अधिक टिके अचीवमेंट को इंक्लाइन करो कंपेयर टू ड्रॉबैक्स तो सेटा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा देखो एटा गोटे क्वेश्चन कहिछि कि इंडिया's फेडरल अरेंजमेंट leans towards symmetry though it incorporates certain asymmetric elements to what degree has its constitutional asymmetry in Indian federalism fostered inclusivity amid the nation's diversity? Share your insight on this. अर्थ एठी देखो कीवर्ड्स रे कोन कोन मु तुमु देछि अप्रोच केमति तमे करिवै क्वेश्चन टाको अप्रोच होछि गोटे होछि फेडरल स्ट्रक्चर तमरो जो इंडियन फेडरलिज्म जो चैप्टर अछि ता ऊपर एटा क्वेश्चन अछि आ गोटे होछि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कोन सिमेट्रिक फेडरलिज्म कोन सिमेट्रिक फीचर्स एसिमेट्रिक फीचर्स आ गोटे कीवर्ड्स तमरो अछि अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी अर्थ कोन किसी कहिछि कि हमर जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमर भारत गोटे बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री ता भितरे हमर फेडरल जदि हम देखिबा बहुत सारा फीचर्स अछि सिमेट्रिक फीचर बहुत सारा एसिमेट्रिक फीचर इत्ते सब कॉम्प्लेक्सिटी भितरे स्टिल वी आर यूनिटरी इन सेंस तो शेयर योर थॉट ऑन दिस तो एई जिंसो पर तमरो थॉट तमे आलोकपात करो से क्वेश्चन ता तुमको से पछाछि तो तमरो निजर ओपिनियन से मागी छी कि कोन तमे भाबुछो देखो यार आंसर ता केमिति हबो अगेन देखिबा यार जो क्वेश्चन से पछाछि हमें जानी गले कि ए कीवर्ड्स जो गुडा ए कीवर्ड्स सहित हमें रिवॉल्व करिबा इंट्रोडक्शन रे कोन देबो ब्रीफ तमे देबो फेडरल स्ट्रक्चर ऊपर बॉडी रे तमे कोन लिखिबो कि हाइलाइट द सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वितीय पॉइंट तमे कोन मेंशन करिवो टू व्हाट एक्सटेंट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल एसिमेट्री इन इंडियन फेडरलिज्म एम्ब्रेस इट्स डाइवर्सिटी ने केते मात्रा रे जो एसिमेट्रिक फीचर्स अछि केते मात्रा रे हमरो भारतर डाइवर्सिटी को विभिन्नता जोडा हम कहू ताकू से आपणे नैछि ताकू से एक्सेप्ट करिछि ओके और कंक्लूजन रे ब्रीफली तमे रेलेवेंट सजेशन सहित कंक्लूड करि पारिबो लेट अस अंडरस्टैंड सो फर्स्ट हमें इंट्रोडक्शन करिबा दिस इज द इंट्रो इंट्रोडक्शन तमे केमति लिखियो अगेन मु कहि रखु छी 10 मार्क 10 मार्क केते 150 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली ओके सो you how can you start with the federal structure केमिति फेडरल स्ट्रक्चर तमे डिफाइन करूछो एठी since the distribution of powers between center and state
is not uniform across all domains, variation emerges in how different states and constituent units with the Indian Union interact with the center. अर्थ कि जेहेतु सेंटर और स्टेट भितर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अछि सेटा सबु क्षेत्र रे ऑल डोमेन्स रे सेटा समान नुह तार अर्थ किछि किछि डोमेन्स रे अधिक अछि किछि किछि डोमेन्स रे कमी जाइछि and that results into dissimilarities in the dynamics of Indian federalism जोटा कि तमे asymmetric features बोली कहूछ ओके so asymmetric federalism कोन a federal system in which constituent states do not have equal powers अर्थ asymmetric federalism ताकू कहा जाय symmetric federalism रो अर्थ कि सबुआडे equivalent distribution of the power अछि सेंटर स्टेट मानको भितरे और स्टेट मानको भितरे equivalent distribution of the power but asymmetric federalism रे कोन होची कि equivalent distribution of the power हे परिबोनी इंडिया क्षेत्र तो it is not possible and why is that so because we are a diverse country तो गोटे स्टेट रो ज्योग्राफिकल एवं सोशल रिक्वायरमेंट ताकर डिमांड डिफरेंट अछि तो से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रो डेफिनेटली इट इज एसिमेट्रिक हबो सो लेट अस अंडरस्टैंड एठी कोन कोन पॉइंट आमे दबा गोटे पॉइंट देले कि सिमेट्रिक फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कोन कोन सिमेट्रिक फीचर्स अछि कॉमन स्ट्रक्चर organizations powers and functions of central and state governments सेगुडा सबु राज्य पय हमें कॉमन रखिछु इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एटा गोटे सिमेट्रिक सबु राज्य एवं हमर कंट्री पय हमें सेम रखिछु पार्लियामेंट्स यूनिलैटरल पावर टू चेंज द स्टेट बाउंड्रीज ओके सेंटर अपॉइंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नेंस समस्त पय सेम अछि जिंसोडा कहा को सेमते डिस्क्रिमिनेशन हो इलेक्शन कमीशन कंडक्टेड स्टेट इलेक्शंस सो दीज आर सिमेट्रिक फीचर्स asymmetric features कौन कौन देखो representation in parliament based on population this is an asymmetric feature अर्थ गोटे राज्य रो अधिक representation अछि आ गोटे राज्य रो कम representation अछि based on population union territories with or without legislation किछटा union UT रे legislation अछि किछटा UT रे legislation नाही special provisions किछि किछि अछि जम्मू एंड कश्मीर हे गेला नागालैंड हे गेला एबे तो जम्मू एंड कश्मीर जो आर्टिकल 370 से तो हटि जाई छी बट फिर भी किछि किछि जिंस तांकर तांकू टिके प्रायोरिटी हिसाब रे दिया है सिक्किम हो मिजोरम हो जोड़ा 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल भीतर भी आसुची ट्राइबल एरियाज डोमिनेटेड जोड़ा रहउची आसाम हो मेघालय मिजोरम एटसेट्रा ओके दीज आर एसिमेट्रिक फीचर त हमरो देखो बॉडी रे तुमको मु अप्रोच कोन लिखितले हाइलाइट तमे कहले एते डिटेल्स भीतर को जीवनी कि यू नो रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट भीतर तमे जदी लिखिबो कि को राज्य रो केते रिप्रेजेंट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड तबे टिके खाली हाइलाइट करिवो कि कोन कोन सिमेट्रिक फीचर कोन कोन एसिमेट्रिक फीचर तापर कोन देछि तापर हमको कोन फुलफिल करिया पड़े व्हाट इज द डिमांड इज टू व्हाट एक्सटेंट जो सेकंड पॉइंट है ताकू तमे लिखिबो टू व्हाट एक्सटेंट हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल एसिमेट्रिक इन इंडियन फेडरलिज्म हैज एम्ब्रेस इंडियास डाइवर्सिटी ताकू हमें कोन लिखिबो ताकू हमें दीटा पॉइंट लिखिबा कि अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी थ्रू एसिमेट्रिक फेडरलिज्म रे एसिमेट्रिक सेटअप कैन बी इफेक्टिव व्हेन स्टेट नीड्स आर डाइवर्स रिलीजियसली कल्चरली एंड एथनिसिटी जदी एसिमेट्रिक फीचर केतेबळे इंपोर्टेंट जदी हमें जेमति प्लानिंग कमिशन समय रे कोन थिला कि सेंटर गोटे प्लान करला सब राज्य पय गोटे सिमिलर प्लान होची बट व्हाट इज द प्रॉब्लम इज दैट कि ओडिसा रो जो रिक्वायरमेंट मे बी केरला रो रिक्वायरमेंट तो डिफरेंट हेई पारे ओके तो सेही केस रे हमको अलगा अलगा प्लान दरकार ओडिसा पय अलगा प्लान मे बी ओडिसा रो प्रायोरिटी अलगा हेई पारे ओडिसा क्षेत्र रे मे बी यू नो एम्प्लॉयमेंट रो प्रायोरिटी अधिक हेई पारे कंपेयर टू केरला तांकर जदि एजुकेशन देखिबा ओडिसा पय अधिक इंपोर्टेंट एजुकेशन केरला रे ऑलरेडी एजुकेशन रो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत भलो स्ट्रांग एस्टैब्लिश हेई साची तो तांकर मे भी रिक्वायरमेंट किछ अलगा हेई थाइ पर तांकर प्रायोरिटी किछ अलगा हेई पारे तो एई केस रे एसिमेट्रिक फीचर गुडा बेटर हबो ओके देन चैलेंजेस ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म रे कोन कोन के नेशनल सिक्योरिटी इंप्लिकेशन जिन जम्मू एंड कश्मीर रे गोटे प्रॉब्लम होची ओवरलैपिंग ऑफ द पावर्स domination by the center and emerging challenges of the union territories these are the challenges of the asymmetric federalism okay ame accommodation to ame jani gale kothre better but ethire ame challenges bi achi to ame finally conclusion kon likhiba ki asymmetric features of indian federalism have been able to accommodate diversity to a great extent ame agree koruchu tar arth jo question pacharchi jo ei jo point ta pacharchi कि शेयर योर थॉट्स टू व्हाट डिग्री हैज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एसिमेट्रिक माने केते तमे राजी होचो कि एसिमेट्रिक फीचर ता हम भारत रो फेडरलिज्म रे हमर डाइवर्सिटी को से एक्सेप्ट करै छी तो हमें एठी आंसर कोन लिखिबा हां लिखिबा हमें एग्री करू छे
कि ग्रेट एक्सटेंट मैक्सिमम एक्सटेंट पर्यंत हमरो एसिमेट्रिक फीचर गुडा ताकू सफाइस करूची हेल्पफुल होची बट validity needs to be checked often and action taken meet the demand of the current times अर्थ जेमती फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 सेही समय एसिमेट्रिक फीचर गोटे थिला बट एबेर समय सहित ताकू हमें हटाई देले बुझी परछो ताकू हमें कोन करले इट वाज डन विथ जम्मू एंड कश्मीर तो वर्तमान समय रे हमें भाला हमको लागिला कि ना ए एसिमेट्रिक फीचर टा रखिबाटा एते ठीक हबो सो टाइम टू टाइम हमें कोन तमे तो शेयर योर थॉट्स रे तमे कोन लिखुचो कि टाइम टू टाइम ए फीचर्स गुडार चेक हवा दरकार एंड जदि कोनोसी एक्शन दरकार हमको एक्शन नबाकू पड़िबो else a sense of partially creeps in and the other entities equality in a federal structure will be put to stake जदि हमें एक्शन न नबा ताले प्रॉब्लम कोन हबो कि गोटे यू नो अनइक्वल भावना कि गोटे राज्य भाबियो जे तांकू अधिक मिलुची आ गोटे राज्य भाबियो जे नै हमको कम मिलुची तो एई जो गोटे भावना ए भावनाटा सब बेले कोन हबो सिसिडिंग माने देशरु बाहर जिबार गोटे मनोभाव गोटे तयारी करिवो तो सेथि पई आमे जदि चाहूचे आमे यूनिटी हेके रहिबा तले एसिमेट्रिक फीचर्स गुडा डेफिनेटली इंपोर्टेंट आमे एग्री करूछु पर ता सहित टाइम टू टाइम हमको चेक करिया पड़िवो कि केते दूर एसिमेट्रिक फीचर्स गुडा केते समय पर्यंत तार रेलेवेंस अछि जदि रेलेवेंस नाही सेथिरे जहां भी रिफॉर्म्स दरकार हमको से रिफॉर्म्स गुडा आनिबो पड़िवो ओके इज इट अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू केमती क्वेश्चन आंसर लिखियो 150 वर्ड्स Yes, sir. ओके किछि जदि कार प्रश्न अछि पचारो सर पचारो सर जो सिमेट्रिकल फीचर एंड एसिमेट्रिकल फीचर्स अछि सेडा फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स सेम ना डिफरेंट सेडा एठी तमर डेफिनेशन देला देखो फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स पचारनी सी पचारची इंडियन फेडरलिज्म अर्थ कि सेंटर स्टेट भीतर आउ स्टेट भीतर जो रिलेशन शेयरिंग पावर स्टेट आउ स्टेट भीतर रिलेशन दिस इज कॉल्ड एज फेडरल ए जो पूरा स्ट्रक्चर टा को मैं फेडरलिज्म कहूचे तो सिमेट्रिक फीचर कहा को कहबा जेमती इलेक्शन कमिशन पाखरे पावर अछि कि सी सब राज्य पई सी इलेक्शन करि परिबो तो सी एल सिमेट्रिक फीचर बुझी परछो सी एला कोन सिमेट्रिक फीचर इमिति न जे ओडिसा पई गोटे स्पेशल किछि गोटे हबो सिमति नु तो जेमिति अलगा राज्य रे इलेक्शन होची सिमति सब राज्य रे इलेक्शन हबो एसिमेट्रिक फीचर्स कोन कि ओडिसा रो केतेटा एमपी लोकसभा किमा राज्यसभा को जिबे आ उत्तर प्रदेश रो केतेटा एमपी लोकसभा किमा राज्यसभा को जिबे डेफिनेटली उत्तर प्रदेश रो पॉपुलेशन एवं जियोग्राफिकल जेहेतु अधिक सेटु अधिक एमपी जिबे दैट इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिक फीचर माने एटा राज्य पई समान नुह अलगा अलगा राज्य पई जो रिक्वायरमेंट अछि से रिक्वायरमेंट हिसाब रे चेंज होउची दिस इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिक फीचर ओके इट हैज नथिंग टू डू विथ फेडरल फीचर एंड यूनिटरी फीचर सेटा से कहूनी प्रश्न सेटा नुह इंडियन फेडरलिज्म भितरे को फीचर्स गुडा सबु राज्य एवं सेंटर पई सेम ताको हमें सिमेट्रिक कहिबा को फीचर्स गुडा सबु राज्य एवं सेंटर पई सेम नुह ताको हमें कहिबा एसिमेट्रिक फीचर ओके ओके ठीक अछि देखो आउ गोटे क्वेश्चन एठी हमें रखिबा आई थिंक जोडा गोटे बर्निंग टॉपिक चली छी रिसेंटली भी बहुत प्रोबेबल भी अछि क्वेश्चन टा एक राष्ट्र एक निर्वाचन जोटा कि वन नेशन वन इलेक्शन परफॉर्म ए कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल इलुसिडेटिंग बोथ इट्स मेरिट्स एंड ऑब्स्टेकल्स उभय तार मेरिट और ऑब्स्टेकल्स विषय तमे लिखो एडिशनली प्रपोज स्ट्रेटजीज टू रेंडर इट्स वर्केबल देखो एठी कोन एठी तीनटा जिंस अछि फर्स्ट जिंस कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन ता ऊपर तमे लिखिया को कहि नंबर 1 द्वितीय जिंस यार मेरिट और ऑब्स्टेकल्स विषय लिख तृतीय जिंस तमर निजर स्ट्रेटेजी लिख कि एटा केमिति आमे आकू इंप्लीमेंट करि परिबा बहुत समय कोन हुए स्टूडेंट्स कि तमे खाली वन नेशन वन इलेक्शन देखि देगी तमे कोन करो लिखिया स्टार्ट करो सिंथि करिवनी एग्जैक्टली जहा क्वेश्चन रो डिमांड से जदि तीनटा पॉइंट पचारची से तीनटा पॉइंट ऊपर ही तमे आंसर लिख अननेसेसरी एक्स्ट्रा ना लिखिवो ना कम लिखिवो ओके तो एठी कीवर्ड्स कोन कीवर्ड्स होची वन नेशन वन इलेक्शन किबा साइमल्टेनियस इलेक्शन होची तार कीवर्ड ता केमिति इंट्रोडक्शन तमे ब्रीफली दबो कि डिफाइन व्हाट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन और रिसेंट प्रपोजल कोन चलसी बॉडी रे कोन लिखिबो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन रो इंपोर्टेंस कोन अछि ओके
केमिति ताको मोर मीनिंगफुल करा जाय परिबो आउटलाइन फ्यू लिमिटेशंस ता ऊपर हमें फोकस करबा देखिबा यार आंसर ता केमिति हबो ये भी तमरो 10 मार्क्स और 150 वर्ड्स देखो वन नेशन वन इलेक्शन हाँ आ गोटे जिनस मु कहि रखिबी जेतेबेले भी तमरो किछि किछि कीवर्ड अछि तमे मु सजेस्ट करिवि कि तमे आइदर ताको अंडरलाइन कर दिबो बेटर बिकॉज़ तमे तो सेठी बोल्ड करि परिबोनी जदि तमे कहार ना मेंशन करूछो मे भी तमे कैपिटल लेटर रे लिखि परिबो दिस इज ओनली गोटे सजेशन इफ यू वांट टू टेक इट यू कैन टेक इट आल्सो ओके तो जेतेबेले तमे कीवर्ड किछि लिखुछो तमे आंसर रे अंडरलाइन करिवो परे आई थिंक मु टॉपर्स मानकर किछि किछि कॉपी अछि मु देखैबी तुमको शो करेबी मे बी गोटे सेपरेट मु क्लास करेबी ता ऊपरे से तुम जानि परिबो जे ओपीएससी केमिति इवैल्यूएट करूची एक्चुअली ओके तो जेतेबेले भी तुमको लागे किछि किछि कीवर्ड्स अछि ताको अंडरलाइन करिया पे ट्राई करो देखिबा इंट्रोडक्शन दबा फर्स्ट इंट्रोडक्शन कोन लिखिले कि वन नेशन वन इलेक्शन इज अ सिग्निफिकेंट रिफॉर्म ऑन करंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स एजेंडा ओके इट एम्स कोन व्हाट इट एम्स यार ऑब्जेक्टिव कोन सिंक्रोनाइजिंग लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस सिंपल ओके तमे ब्रीफली गोटे दीटा सेंटेंस रे तमे कोन कलो लिखि देलो कि वन नेशन वन इलेक्शन कोन व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन नाउ while it has gained attention recently the idea is not entirely new the central idea behind one nation one election again देखो now here is a tip to all of you गोटे जिनस मु सब बेले ऑब्जर्व करि जे पिलांगर जदल मु आंसर इवैल्यूएट करे से माने ए जो शॉर्टकट 1 o n o e एटा तमे जदी एठी लिखि दबो विदाउट मेंशनिंग वन नेशन वन इलेक्शन इवैल्यूएटर जानिबो केमती कि o n o e रो फुल फॉर्म होची वन नेशन वन इलेक्शन सो सब बेले मन रखो किछि किछि शॉर्टकट जेंति सुप्रीम कोर्ट एससी तो तमे जदी लिखि दबो स्टार्टिंग रु एससी हैज एससी रो अर्थ कोन सुप्रीम कोर्ट तमे जणिया पे चाहूछो किमा शेड्यूल कास्ट जणिया पे चाहूछो सेटा क्लियर न हो इवैल्यूएशन को तमे सेना जानिछो तमे कोन लिखिया पे चाहूछो बट इवैल्यूएटर जानिबो केमती तो सब बेले गोटे सजेशन लिखो गोटे भलो आंसर गोटे भलो स्टूडेंट से कोन प्रैक्टिस करे कि जदि तमे तार शॉर्टकट परे मेंशन करिया पे चाहूछो जेमति मु एटा परे मेंशन करिछि ता पूर्वरु मु कोन करली एठी वन नेशन वन इलेक्शन लिखिली ब्रैकेट रे 1 o n o e लिखि देछि और अर्थ मु इवैल्यूएटर को जणिया पे चाहूछि कि जति मु o n o e परे लिखिबी यार अर्थ होछि वन नेशन वन इलेक्शन ओके सो दीज आर द सर्टेन बेस्ट प्रैक्टिसेस टू राइट अ गुड आंसर ओके केबे भी जदि तमे शॉर्टकट लिखुछो शॉर्टकट ता पूर्वरु डिफाइन कर दबो ता परे तमे शॉर्टकट लिखो कीवर्ड्स लिखो डोंट वरी किछि प्रॉब्लम होबनी so the central idea behind ONOE one nation one election is to streamline the election cycles यार central idea कोन streamline करिबा concentrating governance efforts once elections are over frequent elections often lead to virtual paralysis of administrations negatively affecting india's growth prospects अर्थ कि जदि प्रत्येक समय रे किछि किछि मास छाडी कि जदि हम इलेक्शन जदि स्टार्ट कर दबा गोटे एडमिनिस्ट्रेशन जोटा अछि तांको ऊपर बहुत अधिक लोड हे जाउची ओके सो दिस कांसेप्ट ऑफर्स सेवरल पोटेंशियल बेनिफिट यार बहुत सारा बेनिफिट अछि हमें कोन मेरिट और डिमेरिट दिटा लिखिया पे से कहिछि सो से जिंस हम लिखु छै एठी इंक्लूडिंग रिड्यूस इलेक्शन कॉस्ट कोन कोन मेरिट अछि इलेक्शन रो कॉस्ट तमरो रिड्यूस होछि कंटिन्यूटी इन पॉलिसी डिसिजंस रे कंटिन्यूटी चलछि डिक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस बारंबार डिप्लॉयमेंट रो दरकार होबनी थरे तमे डिप्लॉयमेंट कलो इलेक्शन पई एवं से माने अन्य कोनोसी कामर से माने विनियोग हेई परिबे हाउएवर इट आल्सो प्रेजेंट चैलेंजेस देखो मु तुमको कोन कहले क्वेश्चन रे डिमांड पचारछि मेरिट कोन डिमेरिट कोन तो से दीटा जिंस ही हम एठी कवर करू छै सो एठी हम कोन लिखले कि कोन चैलेंजेस सच एज नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करिया पड़िबो लॉजिस्टिकल बहुत बड़ गोटे इशू रहिछि कंसर्न अबाउट ओवरशैडोइंग रीजनल इंटरेस्ट ओके जदि वन नेशन वन इलेक्शन करूछि जो रीजनल इंटरेस्ट माने स्टेट लेवल रो जो इंटरेस्ट अछि मे बी तांकर डिमांड ता एते फुलफिल न हे पारे दीज आर द चैलेंजेस तो मेरिट और चैलेंजेस भी हमें लिखिले सो एबे तमे कोन लिखुछो एबे थर्ड जिंसो कोन एठी कोन क्वेश्चन पचारछि पडा गला सेटा हां एठी पचारछि कि एडिशनली प्रपोज स्ट्रेटजीज टू रेंडर इट वर्केबल माने एटा काम करिवो बोली तम निजरो कोन जदी किछि स्ट्रेटजी अछि तो प्रपोज करो देखिबा कोन सो एज अ पार्ट ऑफ द कंक्लूजन हम ताको प्रपोज करिवा कि वन नेशन वन इलेक्शन टू बिकम अ रियलिटी हबा पई इट रिक्वायर तमे कोन प्रपोजल दोचो
तमे प्रपोजल दोचो कि इट रिक्वायर्स कंसेंसस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, constitutional amendments, investment in election infrastructure, increase voter awareness, implementing it hastily is not advised. तमे कहूचो कि ताको hastily जदि जल्दबाजी रे हम ताको implement करबाटा ठीक होबनी. Instead, thorough study, data evaluation, feedback collection from various stakeholders are essential. Ultimately, the decisions on one nation, one elections implementation should rest on the people of India. So this is your advice. सो एई भलिया तमे आंसर ताको देखि परिबो कि वन नेशन वन इलेक्शन जहा जहा पचारची से प्रथम पचाला कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन दियो तमे देलो तापर पचे कहिला कि मेरिट आउ ऑब्स्टेकल्स विषय चैलेंजेस विषय लेखो सेटा भी तमे लिखिलो तापर से कहिला कि प्रपोजेस स्ट्रेटजीज एंड रेंडर इट्स वर्केबल सेटा भी लिखिया पे कहिला तमे सेटा को भी लिखिचो सो देखो तमरो सब गुडा जोडा आंसर अछि मु तुमको टे देखै दोजी खाली सब गुडा आंसर रे मु गोटे तुमको इजी करिया पई तुमको गोटे माने बेटर गोटे आइडिया दवा पई आंसर राइटिंग टाको गोटे भलो क्वालिटी फोकस करिया पई सब गुडा क्वेश्चन रे मु तुमको अप्रोच टा मु एटे मेंशन कर देछि ओके जहा जहा तुमको दरकार आराम से एगुडा होछि तो 10 मार्क रो क्वेश्चन 20 मार्क भी तुमको टे शो करे दोछि लुक एट दिस दीज आर 20 हां 11 नंबर देखो दीज आर 15 मार्क्स माने तुमको पाखा पाखी 250 वर्ड्स रे तुम लिखिबो तो 250 वर्ड्स रे केमिति लिखिबो ता पई भी मु एटे लिखि देछि कि कोन कोन तुम कीवर्ड यूज करिया दरकार इंट्रोडक्शन केमिति लिखिबो बॉडी केमिति होवा दरकार कंक्लूजन केमिति होवा दरकार आ सुंदर भाबरे गोटे तमरो मॉडल आंसर एटी रेडीमेड अछि ओके सिन सब गुडा क्वेश्चन एटा कर गोटे दिटा नो सब क्वेश्चन रो भी मु तुमको जो रिक्वायरमेंट यूपीएससी स्टैंडर्ड रो से हिसाब रे तुमको एटी मॉडल आंसर अवेलेबल अछि ओके सो समस्त को बुझा पड़ला क्लास जदी कहारे किछि क्वेश्चन अछि पचारो did you understand all of you yes अभिषेक अनिल भगवान जगमोहन लोपामुद्रा प्रशांत समस्त बुझी पालो Yes, sir. Yes, sir. ठीक अछि सो याकू तमे फोकस करो डू नॉट वरी यू आर इन सेफ हैंड्स आंसर राइटिंग पे एते वरी होबा दरकार नै आराम से तमे टेस्ट सीरीज गुडा लिखो आ मॉडल आंसर गुडा तमरो स्टूडेंट पोर्टल रे अपलोड हेइ जिवो ताको तमे आराम से निजे पढो बट मॉडल आंसर ताको इट शुड बी ओनली अ मॉडल मु सब बेले तुमको टारगेट करिवि आउ गोटे माने डायरेक्शन देबी केबे भी कॉपी पेस्ट करिवनी मॉडल आंसर रो कि नै सर तो एमटी दैछन मु एया एग्जैक्टली लिखि सिंती करनी निजरो भी किछि ओरिजिनलिटी तमे टिके मेंटेन करो देखिबो बहुत बढ़िया मार्क आसीबो ओके सर हां इवोल्यूशन कॉपीटा कबे मिलिबो बुझी पलेनी जो आम कॉपी आंसर देलु सर लिखिছি सर ए हाँ कॉपीटा पीडीएफ फॉर्मेट चेक केबे मिलिबो हाँ हाँ सेटा 2-3 दिन खंडे टाइम लागुची इवैल्यूएशन करिया पे आ बहुत पिला एक्चुअली देइछन सबमिट करछन्ती ऑनलाइन ऑफलाइन रे तो तुमको निश्चित रूप में मिलिबो सेठी मु जो तुमको देखैले जो फीडबैक एटा एथे आई थिंक तुमको एई फीडबैक ता दिया हैतिबो एई फीडबैक एई बळे फॉर्म रे गोटे मिलिबो तुमको ओके सेटा तो निश्चित मिलिबो नल तुम जानिबो केमति कि तमरो मु तो सिना मॉडल आंसर दे देली बट एई मॉडल आंसर रो कंपैरिजन रे तमरो आंसर ता केते बेटर है जानिबो केमति मिलिबो निश्चित रूप ओके ओके सर से टिके टाइम लागे 2-3 दिन कोन टाइम टिके लागिवो बिकॉज़ बहुत पिलांकर खाता अछि भलो भाबरे गोटे गोटे करी मते चेक करिया पड़िबो तो जार जो सब्जेक्ट जेंति पॉलिटी हो ए सब जिंस मु निजे करिवि अलगा अलगा फैकल्टी अलगा अलगा सब्जेक्ट करिवि ऑलराइट Excuse me, sir. हां वो सर मो फर्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट करि पार नथली तो एबे मु मोर आंसर सबमिट करले हो सर हां कर दियो ओके करेगी टिके इंटीमेट कर दबो सर हमरो जे एकेडमिक नंबर अछि तम कहिबो राइट सर अदरवाइज से पेंडिंग रह जाए नोटिफिकेशन हमको आसे नहीं सेति में जेतोळे करिवो टिके इंटीमेट कर दबो ग्रुप रे जे नाही सबमिट कर दिसो बोली श्योर श्योर सर श्योर सर ठीक अछि सो आज पई एतिकी बाकी मु तुमको टिके गोटे डायरेक्शन दे देली पुनी नेक्स्ट गोटे मु क्लास नेबी जोथरे के आउरी भी डिस्कशन मु करिवि आ मॉडल आंसर टा को तुम रेफर करो आ भलो भाबरे जेमती एग्जाम क्वालिफाई करिवो डू नॉट वरी मु अगेन कहि रखुची यू एंड मी टुगेदर आमे मिसिकी जेमती मेंस रे भलो मार्क आसीबो से भली आमे टारगेट करिवो तमे खाली टिके सिंसियरली टेस्ट गुडा लेखो आउ
जदि तुम टेस्ट गुड़ा मिस हो जाउची भावनी जे नाई पाइल अप हेगला पेंडिंग हेगला मु कोन करबी सेमति करनी सिंसियरली तुम लेखो आराम से तुम क्वालिफाई करिवो हैला सो आज पा एति ताले पुनी आथरा में देखा हबा गोटे नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू सो मच गुड नाइट सर Thank you, sir. Good night, sir.